Welcome to our channel Tech Lover. Today we start a journey through the complex city of the Indian Constitution to unreveal the significance of Article 16. So आज हम लोग आर्टिकल 16 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल 16, व्हाट इट इज अबाउट, ये किसके बारे में क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग आर्टिकल 16 को आज समझेंगे। ओके, वी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। Article 16 of the Constitution of India is a crucial provision that address the concept of equality in matter of public employment. Okay, let's dive into the depth of the Constitution article to understand its nuisance and implications. So आज हम लोग समझेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है आर्टिकल 16 के, उनको डेप्थ से समझेंगे कि जो इक्वलिटी है इन द मैटर ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वलिटी है वो किस तरह से काम करती है और व्हाट इट से अबाउट इन आर्टिकल 16, इसके बारे में क्या कहता है। So Article 16 guarantee the equality of the opportunity in the matter of public employment to all the citizens. But what does it mean and how does it shape the Indian employment landscape? Okay, so let us see. Firstly, Article 16 Clause 1 ensure that there shall be no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them. It's the foundation for a merit-based, inclusive approach to the public employment. So Article 16 Clause 1 बात करता है कि यहाँ पे किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट में, लाइक रेस पे या रिलीजन पे या कास्ट पे या फिर जेंडर पे या प्लेस ऑफ बर्थ पे या रेजिडेंस पे। देयर इज अ 7 ग्राउंड, सो ऑल ऑफ लाइक इन 7 ग्राउंड पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ऑल द सिटीजंस आर इक्वल। ओके, सो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में यही बात हुई। नाउ सी द आर्टिकल 16 क्लॉज 2 एम्पावर द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट in favor of the backward class of the citizen, which in the opinion of the state is not adequately represented in services under the state. So article 16 clause 2 में जो state government है वो backward जो classes हैं उनको reservation देंगे employment में। okay, this provision is a crucial tool for the achieving social justice and addressing historical इम्बैलेंस इन द रिप्रेजेंटेशन। और जो ये प्रोविजन है ये क्रूशल टूल है अचीव करने का सोशल जस्टिस, बिकॉज पीपल्स आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, सो वी आर ट्राइड टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, रिमूव द बैरियर। ओके, उसको सबको इक्वल फुटिंग में लाने का एक एफर्ट्स है गवर्नमेंट का। ओके, तो नाउ सी what is article 16 clause 3 say? Article clause 16 allow the state to make the provision for the representation of the Anglo-Indian community in public service. Although this provision is not applicable after the first 10 years of the Republic, it played a significance in the early year of the independent India. Article 16 clause 4 is a pivotal in the context of the affirmative action. This empower the state to make a special provision for the reservation of the appointment or post in the public services for scheduled caste and scheduled tribe. So article 16 clause 4 में जो आपका affirmation दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी सर्विसेज में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। ओके, एंड दिस प्रोविजन एम टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंश्योर दे आर रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक सर्विसेज। और इस प्रोविजन का जो उद्देश्य था वो लोगों को जो कम्युनिटी है उनका अपलिफ्टमेंट करना था, उनका कल्याण करना था, उनको सोसाइटी में इक्वल फुटिंग पे लाना था। दैट इज द मेन एम ऑफ इट। So Article 16 of the Constitution of the India is like, now let's see the provision. अब हम लोग एक बार बेयर एक्ट देख लेते हैं कि बेयर एक्ट में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया एंड वी अंडरस्टैंड इट। सो इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर टू रिलेटेड द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सो आर्टिकल क्लॉज लाइक 16 क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है उसकी इक्वलिटी होगी, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऑल द सिटीजन जो इसमें एम्प्लॉयमेंट के मैटर में है या अपॉइंटमेंट है किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में,
देयर नो डिस्क्रिमिनेशन, ओके, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात हुई। नाउ व्हाट क्लॉज 2 से, नॉट सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be eligible for or discriminated against the respect to any employment or official under the state. So उन्होंने कहा है कि no citizen shall on ground only the religion, किसी भी सिटीजन को ओनली इस ग्राउंड पे कि वो इस रिलीजन से बिलोंग करता है, इस कास्ट से बिलोंग करता है, इस लाइक पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करता है, या यहाँ उसका जन्म पर्टिकुलर इसी स्टेट में हुआ है, या ये वो यहाँ पे ही रहता है, यहाँ का ही रेजिडेंशियल से, इस बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। That it say about, like, okay, now let's see the 16 clause 3. Nothing in this article shall prevent parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of any local or other authority within a state or union territory, any requirement at the residential residence within the state or union territory prior to such employment or appointment. सो इसमें क्या करते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना करके ऐसे लोगों को जो कि उनका अपॉइंटमेंट कर सकती है। सो स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक द लॉ रिगार्डिंग द सेम। Now let's see the clause 16, clause 4. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of the appointment or post in favor of any backward classes or citizen which, in the opinion of the state, is not adequate represented in the service under the state. So इसमें क्या बोला है कि इसमें लाइक नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, कि इस आर्टिकल में कोई ऐसा लाइक क्लॉज नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट को रोकेगा। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ एंड अपॉइंटमेंट कर सकती है रिजर्वेशन देके बैकवर्ड क्लासेस को, या जो आपका शेड्यूल ट्राइब है उनको, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर्विसेज में, तो उन लोगों को लाइक रिजर्वेशन दे करके सोसाइटी में इक्वल फुटिंग पे लाया जाए। दैट्स द एम ऑफ इट। Okay, now what it say, like अब हम देख लेते हैं what is article 16 clause 4a say. So there is a clause 4a. Nothing in this article shall prevent the state for making any provision for reservation in matter of promotion with consequential seniority or any class or classes of post in the service under the state in favor of the scheduled caste and the scheduled tribe within the opinion of the states are not adequate represented in the service under the state. और जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जिस क्लास का नहीं है उस क्लास को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा सीनियोरिटी के बेसिस पे विद द कंसिक्वेंशियल सिक्योरिटीज टू एनी क्लास, किसी भी क्लास का हो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोशन में भी। सो दिस इज से इन द क्लॉज 4a, आर्टिकल 16 क्लॉज a 4 टॉक अबाउट द प्रमोशन इन द सर्विसेज, like reservation in the promotion, you can say like that. Okay, now 4b, what is talk about? Nothing in this article shall prevent the state from the considering any unfilled vacancy of a year are to be reserved for being filed up in that year in accordance with any provision of any succeeding year or year, and such class of vacancies shall not consider together in the vacancies of the year in which they are being filed up for determine the ceiling of the 50% reservation on total number of vacancies of that year. That's mean what it say, like is suppose I will give you an example. Suppose this year there is a vacancy, like suppose there is a 15 vacancies and 20 vacancies are reserved for the OBC, or like we can say scheduled caste. So in this 20 vacancies, 10 vacancies are filled this year, but 10 vacancies are not filled because of unavailability of the people. So next year when we are going to enroll more people for the same vacancy, so जो रिजर्व होके आई हैं, जो पिछली 10 वैकेंसी बची थी वो इस साल का जो रिजर्वेशन है, सो बोथ आर कम टुगेदर, लाइक उनको हम लोग खत्म नहीं करेंगे, वो भी आएंगी। ओके, सो वो रिजर्वेशन रहेगा। And now article 16 clause 5, what is talk about? So article 16 clause 5, nothing in this article shall affect the operation of any law which provide that the incumbent of an office of the in connection with the affairs of any religious or denomination institution or any member of the governing body therefore
shall be a person professing a particular religion or belongs to a particular denomination. That means nothing in this article shall affect the operation. यानी कि इस आर्टिकल में जो ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, कानून को अफेक्ट नहीं करेगा, विच प्रोवाइड द इनकम्प्लीमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन. दैट्स मीन अगर कोई व्यक्ति किसी सांप्रदायिक किसी भी सांप्रदायिक संस्थान से या धार्मिक संस्थान से संबंध रखता है और उसका जो पदाधिकारी होगा वो उसी धर्म मतलब जो उस धर्म से या उस संस्थान से होगा वो ही उसका पदाधिकारी बन सकता है और इसके लिए ये किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा. सो व्हाट इट इज लाइक आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में क्या कहा गया है कि इस आर्टिकल में कुछ भी इस लॉ के को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि इस आर्टिकल में किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान या उसके कोई भी अगर उसकी लाइक अदर ब्रांच है तो किसी भी सदस्य के मामले में लाइक कार्यालय का जो अधिकारी होगा जो उसका जो ऑफिसर होगा वो पर्टिकुलर उसी रिलीजन का होगा एंड इसमें या फिर किसी विशेष धर्म से संबंधित होगा. लाइक सपोज देयर इज लाइक मदरसा वी कैन से. सो दैट मदरसा जो उसका मौलवी साहब होंगे दैट बिलोंग्स टू ए मुस्लिम religion. Okay, so that means in this article 16 clause 5, like suppose there is a religion institution like koi gurukul hai, so this gurukul teacher would be belongs to the Hindu, right? That should not be Muslim. So that is the meaning of this article. Therefore shall be person professing a particular religion or belongs to a particular denomination. That means like अगर कोई इस आर्टिकल में शैल अफेक्ट नॉट ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा जिसमें कि कोई जो ऑफिस से कनेक्शन हो या कोई डिनोमिनेशन यानी कि जो रिलीजन या फिर उसके इंस्टीट्यूशन का मेंबर हो, सो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा. ओके, एंड नाउ लेट्स सी आर्टिकल 16 clause 6. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of the appointment or post in favor of any economical weaker section of the citizen other than the class mentioned in clause 4, in addition to the existing reservation and subject to the maximum of 10% of post in each category. So यहाँ पे जो बात की गई है, this is the last like amendment कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन लोगों को भी हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे, लाइक उनको भी रिजर्वेशन देंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए. सो वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है लाइक ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, दैट रिजर्वेशन is upper ceiling is 10%, like that reservation can be up to 10% of the total vacancies. Okay, so this is the last provision. And now what does article 16 of the Indian Constitution say? So now let's see. So article 16 of the Indian Constitution covered the right of equality of the opportunity in the matter related to the public employment. This right is specifically guaranteed to the Indian citizen only. Article 16 clause 1 guarantee equality of the opportunity in matter related to the appointment or employment to any post under the state. It is the applicable only the office or employment related to or held by the government या state. और जो अपॉर्चुनिटी या लाइक इक्वलिटी इन द अपॉर्चुनिटी की हम लोग जो बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कि किसी भी सिटीजन के साथ में अपॉइंटमेंट होगा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. Now, what Article 16 clause say? Now, Article 16 clause 2 stated that no citizen shall be discriminated against in any employment or office under the state on the basis of race, caste, gender, place of birth, residence, or descent. Article 16 clause 1 provide for the general rule which entail that there shall be the equality in the appointment in the public sector job, and there shall be no discrimination for such employment under the state. Only the ground of religion, caste, race, sex, place of birth, descent, or residence. Furthermore, Section 16 Clause 1 and Clause 2 are only applicable to the state appointment or employment.
Clause 3, Clause 4, Clause 4A, 4B, and 5 and Article 16 of the Indian Constitution provide the exception for the general rule of the equality of the opportunity. So जो आर्टिकल क्लोज लाइक क्लोज 6(3) है, क्लोज 4 है, 4A है, 4B है, क्लोज 5 है, क्लोज 6 है, that is the exception of the general rule of the equality of the opportunity. So what clause 3 of the article 16 said? So clause 3 of article 16 stated that the parliament can enact any legislation requiring residents in the state or union territory as per precondition for particular employment or appointment in the respected state or union territory or in local authorities or other authorities within that state or union territory. So clause 3 में कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो या यूनियन टेरिटरी में जो यूनियन गवर्नमेंट है, they can make the law, they can give the reservation, they can appoint the people behalf of these all grounds. Like they can work for the people and with the people. Like these people are belongs to the other backward classes, scheduled tribe. So they talk about it. Article 4 of the article, like clause 4 of the article 16 said, clause 4 of article 16 provided that the state can enact legislation for the reservation of the post in the government sector or job in favor of the backward classes of the citizen, which the state considered to have not been adequately represented in the service of the state. The central government took the view that since the Indira Sahni case related to the backward classes only, the reservation in the promotion of the SC/ST should not be affected and shall continue. However, the Parliament enacted in 77 Amendment Act 1995 and added clause 4A to the Article 16 of the Constitution, thereby enabling the Parliament to make provision for the reservation of the SC/ST in promotion posts. This simply means that even after the judgment of the Mandal Commission case, the reservation in promotion is governing job shall continue. So उन्होंने 77 like इंदिरा साहनी केस के बाद में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसके बाद में भी Parliament bring the amendment in the Constitution, that was the 77 Constitution Amendment, and 4A इन्होंने इंक्लूड कर दिया आपके आर्टिकल 16 में, और उन्होंने कहा कि आपको जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू रहेगा. Now we can't deny this. Now clause 4B of the article 16, clause 4B added after clause 4A of the Indian Constitution under article 16 by way of the 81 Amendment 2000. This was added to the Constitution with the intent that the backward vacancies which could not be filled due to the unavailability of the eligible candidate to the SEBC category in the previous or preceding year shall not be clubbed with a 50% reservation of the SC/ST and other backward classes on the total number of vacancies in the next year. So 81 amendment में 4B जो आपका है क्लॉज एडिट किया गया 81 अमेंडमेंट के थ्रू इन 2000, जिसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं, जो पीछे बची हुई वैकेंसीज हैं, और जो कि इस वजह से फुलफिल नहीं हो पाई क्योंकि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, उन जो वैकेंसीज को क्लब नहीं किया जाएगा जो अभी वैकेंसी आएगी. And with the 15% of reservation of ST/ST and other backward classes is total number of vacancies in the next year. That is it. So now let's see what clause 5 of article 16 say. Clause 5 is exempt a law from the application of the clause 1 and clause 2 which require the incumbent to any office to be the religious qualified for appointment. So उन्होंने कहा जो क्लोज 5 में कि एग्जेम्प्ट करता है ये आपको क्लोज 1 और क्लोज 2 को कि जो कोई अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं which required the income like okay, so religious जो qualified institution religious qualified है उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं आर्टिकल क्लोज 5. Now clause 6, what is talk about? Clause 6 is added the article 16 by the constitution in 103rd amendment in 2019. 2019 में इसको 103 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया which came into the effect of the January 14, 2019, जो 14 जनवरी 2019 को इफेक्ट में आया, and empower the state to make the various provision for the reservation in the appointment of the member of the economically weaker section. और इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी कि वे वेरियस रिजर्वेशन कर सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट जॉब में, सोसाइटी ऑफ द गवर्नमेंट पोस्ट. हाउएवर दिस प्रोविजन मस्ट बी विद इन द 10% सीलिंग, बट ये जो रिजर्वेशन होगा इसमें मैक्सिमम 10% तक का रिजर्वेशन दिया जा सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को.
That is the ceiling of it. In addition to the existing reservation. So on 103rd amendment, like in 2019, ये जो clause 6 है ऐड किया गया. By the way of the 103rd constitution of the amendment, clause 6 was inserted in the article 15 and article 16, which came into the effect of January 14, 2019. सो 103 अमेंडमेंट में दो आपके आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में, और दोनों में क्लोज 6 ऐड किया गया कि आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आपको क्या है एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन देना है. ओके, नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. In conclusion, Article 16 is not just a legal provision; it is a commitment to the equality, diversity, and social justice in the realm of the public employment. Join us for the next video as we are continuing our exploration to the Indian Constitution. Don't forget to like, share, and subscribe the channel for more insightful video in legal world. Thanks for watching. Thank you very much.